उनकी इनिंग्स की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम हो गई और उसने पहले दिन 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन्स बना लिए हैं। डेविड वार्नर की अहलिया कैंडाइस वार्नर ने मिचेल जॉनसन को छेड़ने और तरविल करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। अपने शौहर की शानदार सेंचुरी के बाद उन्होंने एक्स पर वार्नर की तस्वीर के साथ खामोश कराने की इमोजी शेयर की। इस मानी खेज ट्वीट के वायरल होते ही शायकीन अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। अक्सर शायकीन का कहना है कि ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सामने आने वाले हालिया तनाज़ों पर मिचेल जॉनसन को जवाब है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की हतमी नामजदगियों का ऐलान। रोनाल्डो शामिल नहीं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने मेंस और विमेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड की हतमी नामजदगी का ऐलान कर दिया। फीफा ने जुमेरात को साल 2023 के बेहतरीन खिलाड़ियों के अवार्ड्स के लिए हतमी नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। फीफा के ये अवार्ड 19 दिसंबर 2022 से 20 अगस्त 2023 तक खेल में सबसे नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को दिया जाएगा। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड की नामजदगियों में अर्जेंटाइन के लियोनेल मेसी, नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले एर्लिंग हालैंड और फ्रांस के एम्बापे शामिल हैं। विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड की नामजदगियों में एटना बोनमाटी, लिनेडा काइसीडोव और जेनिफर हर्मोसो शामिल हैं। फीफा फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर अवार्ड की तकरीब 15 जनवरी को लंदन में होगी। श्रीलंकन बोर्ड ने सनत जयसूर्या को कौमी टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान और ओपनर सनत जयसूर्या को कौमी टीम का काल वक्ती कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। जुमेरात को श्रीलंका क्रिकेट एसएलसी ने ऐलान किया कि उन्होंने साबिक कप्तान सनत जयसूर्या को फौरी तौर पर 1 साल के लिए कल वक्ती क्रिकेट कंसल्टेंट मुकर्रर किया है। जयसूर्या को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि एसएलसी के कौमी प्रोग्राम बेहतरीन पेशा वराना महारत के साथ मुनक्किद हों। साबिक ओपनर तमाम खिलाड़ियों और कोचिंग अमले की बेहतरीन कारकर्दगी की निगरानी के भी जिम्मेदार होंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि वो परफॉर्मेंस सेंटर के साथ मुंसलिक तमाम टीमों की तरबियत और कोचिंग की ज़रूरियात का भी ख्याल रखेंगे। वाज़ेह रहे कि आईसीसी वर्ल्ड कप में श्रीलंकन क्रिकेट टीम की शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इंतज़ामी सतह पर कई तब्दीलियां सामने आई हैं। लगता है आज़म मेरी ट्रेनिंग से हिचकिचा रहा है। मुइन खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मुइन खान ने अपने बेटे और कौमी क्रिकेटर आज़म खान के हवाले से कहा है कि लगता है आज़म मेरी ट्रेनिंग से हिचकिचा रहा है। पीएसएल फ्रेंचाइज क्वेटा ग्लैडिएटर के टीम डायरेक्टर मुइन खान ने कहा कि यह आज़म की मर्जी पर मुनहसर है कि वो जिस टीम से चाहे खेले। मुझे लगता है कि वो मेरी ट्रेनिंग से हिचकिचा रहा है। लाहौर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तकरीब में ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू में मुइन खान ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आइंदा सीज़न में आज़म दोबारा से क्वेटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन कर लें। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री में नौजवान खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। अहमद शहजाद, उमर अकमला, शर्जील खान को लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मुइन खान का कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग की समत दुरुस्त है। 10 बरस के बाद जब नई टीमें आएंगी कि तो मज़ीद अच्छी होगी। इस वक्त हमारी नज़र क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जितवाने पर है। वाज़ेह रहे कि आज़म खान पहले क्वेटा ग्लैडिएटर का हिस्सा थे, जिसके बाद वो फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए थे, जहां उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। डंकी के गाने उलट पिट गया पर क्रिस गेल की खातून के साथ डांस करने की वीडियो वायरल। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की जानिब से शाहरुख खान की फिल्म डंकी के गाने उलट पिट गया पर डांस करने की वीडियो वायरल हो गई। बॉलीवुड के बादशाह खान की फिल्म डंकी का नया गाना रिलीज हुआ है, जिस शायकीन की जानिब से काफ़ी पसंद किया जा रहा है। गाने उलट पिट गया को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ दी है, जिसे अब तक 61 मिलियन से ज़ायद लोग देख चुके हैं। इस गाने की मकबूलियत ने वेस्ट इंडीज़ के जारे मिजाज बीटर क्रिस गेल को भी अपने सिहर में जकड़ लिया और वो इस गाने पर एक खातून के साथ थिरकते दिखाई दे रही है।
इंटरनेट पर वायरल होने वाली वीडियो में यूनिवर्स बॉस शाहरुख खान की फिल्म के गाने उलट-पिट गा की धन पर अपने रक्स के जौहर दिखा रहे हैं और काफ़ी खुश भी हैं। अपने बल्लेबाजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर क्रिकेटर के डांस की ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो गई है। फिल्म और क्रिकेट शायकीन दोनों ही उनके इस डांस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कैंडाइस वार्नर ने शौहर की शानदार सेंचुरी के बाद जॉनसन के लिए पोस्ट शेयर कर दी। डेविड वार्नर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाने के बाद उनकी अहलिया ने मिचेल जॉनसन को टरविल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज की शुरुआत से कबल साबिक क्रिकेटर मिचेल जॉनसन ने ओपनर डेविड वार्नर को तनकीद का निशाना बनाया था। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलियावी तारीख के बदतरीन स्कैंडल में मुलव्वस प्लेयर्स को टेस्ट मैच फेयरवेल नहीं देना चाहिए। पर्थ में ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कैंगरू ओपनर डेविड वार्नर ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 164 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम हो गई और उसने पहले दिन 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए हैं। डेविड वार्नर की अहलिया कैंडाइस वार्नर ने मिचेल जॉनसन को छेड़ने और टरविल करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। अपने शौहर की शानदार सेंचुरी के बाद उन्होंने एक्स पर वार्नर की तस्वीर के साथ खामोश कराने की इमोजी शेयर की। इस मानी खेज ट्वीट के वायरल होते ही शायकीन अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। अक्सर शायकीन का कहना है कि ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सामने आने वाले हालिया तनाज़ों पर मिचेल जॉनसन को जवाब है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की हतमी नामजदगियों का ऐलान। रोनाल्डो शामिल नहीं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने मेंस और वेमेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड की हतमी नामजदगी का ऐलान कर दिया। फीफा ने जुमेरात को साल 2023 के बेहतरीन खिलाड़ियों के अवार्ड्स के लिए हतमी नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। फीफा के मुताबिक ये अवार्ड 19 दिसंबर 2022 से 20 अगस्त 2023 तक खेल में सबसे नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को दिया जाएगा। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड की नामजदगियों में अर्जेंटाइन के लियोनेल मेसी, नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले एर्लिंग हालैंड और फ्रांस के एम्बापे शामिल हैं। विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड की नामजदगियों में एटना बोनमाटी, लिनेडा काइसीडोव और जेनिफर हर्मोसो शामिल हैं। फीफा फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर अवार्ड की तकरीब 15 जनवरी को लंदन में होगी। श्रीलंकन बोर्ड ने सनत जे सूर्या को कौमी टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर कर। लिंकन क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान और ओपनर सनत जे सूर्या को कौमी टीम का काल वक्ती कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। जुमेरात को श्रीलंका क्रिकेट SLC ने ऐलान किया कि उन्होंने साबिक कप्तान सनत जे सूर्या को फौरी तौर पर 1 साल के लिए कल वक्ती क्रिकेट कंसल्टेंट मुकर्रर किया है। जे सूर्या को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि SLC के कौमी प्रोग्राम बेहतरीन पेशा वराना महारत के साथ मुनक्किद हों। साबिक ओपनर तमाम खिलाड़ियों और कोचिंग अमले की बेहतरीन कारकर्दगी की निगरानी के भी जिम्मेदार हैं। ऑन टंग हमारी सिचुएशन नंबर 1, ऑन माइंड सिचुएशन से चलती रन 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 एवरीबॉडी मूव रन। पॉजिटिव्स को करकशन कह रहे हो। आई एम सो डन विद द ब्लेम, डन विद द गेम। आई नीड टू रिक्लेम माय ड्रीम्स गोइंग अप इन फ्लेम्स। आई एम डन फीलिंग दिस शेम। So why don't we dream, plan, innovate? We can do it. It's never too late. Let's make Pakistan epic. MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइफ, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। खांसी और गिले की खराश के लिए इंतहाई कारामद जड़ी बूटी। मौसम सरमा में नज़ला, खांसी, गिले की खराश की शिकायत आम हो जाती हैं, जिसके सबब बहुत के अफराद बुखार में भी मुब्तला हो जाते हैं। इस सूरत-ए-हाल से घबराने का परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिसे अब घर में रखें और बवक्त ज़रूरत इससे खांसी और गिले की खराश का घर बैठे इलाज करें। मिलीठी किसी भी पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाती है। मिलीठी को अंग्रेजी में लिकोराइस
कहते हैं ये जायकादार जड़ी बूटी तकरीबन 349 कैलोरीज फी 100 ग्राम पर मुश्तमिल होती है, जो कि बुनियादी तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स से हासिल होती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के तहत शाये करदा तहकीक में ये इंकिशाफ किया गया है कि लिकोराइस का अरक हाइपर पिगमेंटेशन यानी जिल्द के कुछ हिस्सों की गहरी रंगत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। मिलीठी में चीनी की मिकदार तकरीबन 44.24 ग्राम होती है। इसमें प्रोटीन तकरीबन 3.47 ग्राम होती है। मिलीठी जरूरी विटामिन्स और मदनियात से भरपूर होती है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन। खांसी के मरीज के लिए मुलठी को छेलकर मोटा कोट लें और चीनी मिलाकर पानी में उबालें और पकाएं। ये शरबत मरीज को 2 छोटे चम्मच दिन में 3 बार पिलाएं। खांसी जाती रहेगी, जबकि चबाकर अरक पीने से भी गिले की तकलीफ का खात्मा होता है। अगर गला सूजा हुआ महसूस हो तो मिलीठी को मुंह में रखकर देर तक चबाएं और उसका रस निगल लें। गिले की खराश में मिलीठी को पानी में उबाल कर इस पानी से गरारे करें। इसके अलावा मतली महसूस हो तो मिलीठी की जड़ को पुदीने की पत्तियों के साथ पानी में उबालें और उसका पानी पिए। 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1 टुकड़ा अदरक और 1 टुकड़ा मिलीठी लेकर पानी में उबालें और काढ़ा बनाकर पिए। ये चाय ख्वातीन के हार्मोनल अदम तवाजुन से लेकर सर्दी के असरात से महफूज रखने के लिए बेहतरीन नुस्खा। I think we all agree that this is a meeting we would rather not be having. As I have said repeatedly, I deplore the barbaric and unjustifiable attacks by Hamas on Israel on the 7th of October, which killed more than 1,200 people. I'm appalled by reports of gender-based violence during the attacks and by the mistreatment of hostages. I'm relieved that 114 hostages have now been released, and I repeat my call for the remaining hostages to be released. I well understand the anger, grief, and fear of the Israeli people following the horrific attacks 2 months ago. I also understand the anger, grief, and fear of the people of Gaza, who had already suffered through 16 years of blockade and are now enduring the destruction of their families, their homes, their communities, and the life they knew. Dr. Mike Ryan and his team will provide a more detailed presentation on the health situation in Gaza, but it's stating the obvious to say that the impact of the conflict on health is catastrophic. More than 17,000 people are reported to have died in Gaza, including 7,000 children. And we don't know how many are buried under the rubble of their homes. More than 46,000 injuries have been reported. 1.9 million people have been displaced. Almost the entire population of the Gaza Strip, and are looking for shelter anywhere they can find it. But nowhere and no one is safe in Gaza. As more and more people move to a smaller and smaller area, overcrowding combined with the lack of adequate food, water, shelter and sanitation are creating the ideal conditions for disease to spread. On average, there is 1 shower unit for every 700 people and 1 toilet for every 150 people. There are worrying signals of epidemic diseases, including bloody diarrhea and jaundice, and there have also been reports of high levels of diarrheal diseases and respiratory infections. The risk
is expected to worsen with the deteriorating situation and approaching winter conditions. Gaza's health system is on its knees and collapsing. Only 14 hospitals out of the original 36 are even partially functional. 2 north of the Wadi Gaza and 12 in the south. Only 1,400 beds are available out of an original 3,500, while about 2/3 of primary health care centers are non-functional. The 2 major hospitals in southern Gaza are operating at 3 times their bed capacity, running out of supplies and sheltering thousands of displaced people. Meanwhile, more than 180 women give birth in Gaza single every day. There are 2,000 patients on cancer therapy, 350,000 patients with diabetes, heart disease and hypertension, and at least 20,000 civilians in need of acute psychiatric care, and many more are expected to suffer from severe mental disorders as a result of the conflict. I visited Al-Shifa Hospital in Gaza City 5 years ago, in 2018. I toured the dialysis ward and the neonatal intensive care unit and spoke with health workers and patients. Even then, conditions were extremely difficult for health workers and for patients. Now, the work of the health workers is impossible, and they're directly in the firing line. Since the 7th of October, WHO has verified more than 449 attacks on healthcare in Gaza and the West Bank, and 60 attacks on healthcare in Israel. Healthcare should never be a target. I also grieve the loss of more than 100 of our UN colleagues in Gaza, including our own Dima Al-Haj, who was killed alongside her 6-month-old son, her husband, and her 2 brothers. In summary, health needs have increased dramatically, and the capacity of the health system has been reduced to 1/3 of what it was. WHO is on the ground in Gaza, alongside our partners, to support health workers who are physically and mentally exhausted and are doing their best in unimaginable conditions. By the way, today I have Rob Holden with us, who just returned from Gaza, our colleague Rob Holden, and our regional director, Dr. Ahmed Al-Mandari, and his team are also with us for any questions you might have. They can give you the first-hand account of the situation. Resupplying these health facilities has become extremely difficult and is deeply compromised by the security situation on the ground and inadequate resupply from outside Gaza. Humanitarian agencies are struggling to cope. The resolution you're discussing today, if adopted, asks me as Director General to do several things: to report on the public health implications of the crisis, to assess the extent of psychiatric morbidity, to strengthen technical and material assistance, and to strengthen our work with partners. But I must be frank with you. These tasks are almost impossible in the current circumstances. Indeed, it's for that reason that the Secretary General last week invoked Article 99 of the United Nations Charter and called for a humanitarian ceasefire. I echo the Secretary General's call, a call I have made repeatedly myself, including during my report to the Security Council
2 weeks ago. और ओपनर सनत ये सूर्या A ceasefire is the only way to truly protect and promote the health of the people of Gaza. I deeply regret that the Security Council was unable to adopt a resolution on such a ceasefire last Friday. I know that negotiations on the resolution for this meeting have been difficult, but I very much appreciate the spirit of cooperation and compromise you have demonstrated, and I welcome your commitment to finding consensus. It's only through dialogue, mutual understanding, and finding common ground that we can ever hope to find a resolution to this crisis and to the many other crises in our troubled world. लगता है आजम मेरी ट्रेनिंग से हिचकिचा रहा है। This year is our 75th year as WHO. The opening words of our constitution remain more relevant than ever. That health is a fundamental human right for all people, and that health is fundamental to peace and security. I urge you to use this moment to fulfill that vision, recognizing as our founders did in 1948 that there is no health without peace and no peace without health. So I hope you will use health as a bridge for peace. Thank you very much. And Chair, back to you. Thank you very much, Dr. Tedros. Now I'd like to give the floor to the Secretariat to provide a technical update on the health conditions in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. Secretariat, you have the floor. Thank you, Chair. यूनिवर्स बास क्रिस गेल की जानिब से शाहरुख खान की फिल्म बेनकीट के गाने हुलक पिट गया पर डांस करने की वीडियो वायरल हो गई। बॉलीवुड के बादशाह खान की फिल्म बेनकीट Good morning, ladies and gentlemen, and let me begin our presentation by also welcoming colleagues. DG has mentioned that we have a regional director for Emerald, Dr. Ahmed Al-Mandari. We also have Rick Brennan, regional emergencies director. We have our special representative to Israel, Michel Theran. Online, we have the regional director for Europe, Dr. Hans Kluge, and we have Dr. Rick Peppercorn and his team in OPT on the line, and Dr. Peppercorn is currently in Gaza. We, as a staff of WHO and as Director General has mentioned, make this presentation in honour of all who have lost their lives in this conflict, and most especially 133 colleagues in UNRWA who've lost their lives, and our dear colleague and friend Dima Abdul Latif Mohammed Al-Haj, who gave her life on the 21st of November 2023. Dima was the head of the Limb Reconstruction Centre in Gaza. She had been displaced from the north to the south of the Wadi Gaza line and was being hosted in her father's house, a long-standing surgeon in Gaza, and she lost her life with that of her child, her husband, 2 brothers, and many members of her family and community. We are deeply shocked and saddened by her loss. I'm going to pass to Dr. Teresa Zagaria. Teresa is the incident manager for this crisis at headquarters and the incident management support team. But the work on the ground is led by our country team, by our country teams, our 2 regional offices, and we at headquarters are really just pulling together all of the work that they have been doing with you, member states, with partners, over the last number of weeks. I'm sure there are elements of this that won't be as comprehensive as you like. We will distribute the slides, and if there are
other requests for more detailed information, we'll be very happy to prepare further details or slides. Teresa, you have the floor. और women's players of the year award की हतमी नामजदगी का ऐलान कर दिया। Thank you very much, Mike. फीफा ने जुमेरात को Excellencies, good morning, good afternoon, and good खिलाड़ियों के evening. अवार्ड्स के लिए If you could हतमी go to the next नामजदगियों का slide, please. ऐलान कर दिया। फीफा के मुताबिक ये अवार्ड In the last 60 days, the World Health Organization is monitoring the public health situation in Gaza, in Israel, in the West Bank, and in Lebanon. This technical presentation will outline public health impacts of the escalation of violence, with a focus on Gaza, the condition of its health system, and illustrate WHO's operational plan and response measure. Next slide, please. लिनेडा काइसीडव और जेनिफर हर्मोसो शामिल हैं। FIFA Footballers of the Year As Award of 7 December, WHO has recorded over 1,200 fatalities and over 5,000 injuries in Israel. Over 70,000 fatalities and close to 50,000 injuries in Gaza. Over 250 fatalities and over 3,000 injuries in the West Bank. And 94 fatalities and close to 400 injuries in Lebanon. Next slide, please. And as of the 6th of December, 134 UN personnel have been killed, and this includes our own colleague Tima. Next slide, please. In Israel, the majority of the casualties are people who were killed during the 7 October attacks or died from injuries in the aftermath of those. Currently, over 2,000 patients are treated in hospitals for injuries. Next slide, please. In Gaza, the trend of fatality to rise, placing a tremendous burden on the already weakened health system. The largest proportion of fatalities recorded were among children, 45%, and women, 30%. Save the Children by end of October reported that the number of children killed in the 3 weeks following 7 of October surpasses annual number of children killed in conflict zones since 2019. From 30 November, there has been a sharp increase in overall daily fatalities. Next slide, please. In the first month of the conflict, 66% of fatalities were reported north of Wadi Gaza and 34% south of the line. It is estimated that more than 100,000 persons are not accessible in northern Gaza. There is no safe place in Gaza. Next slide, please. Over 1.9 million people have been displaced as a direct result of insecurity and evacuation orders. This includes 1.2 million in hosted 159 UNRWA shelters. The overcrowding in shelters, coupled with lack of basic services, has resulted in significant risk to the spread of infectious diseases. Winter is bringing additional risk to health and the urgency of humanitarian assistance. An UNRWA colleague describes the situation as the houses are full, the shelters are full, and the streets are full. Next slide, please. WHO, through its active surveillance system on attacks on healthcare, has recorded and verified a total of 512 attacks since the 7th of October. This has resulted in injuries to patients and healthcare workers, denial of healthcare, and physical destruction of hospitals and ambulances. I'd like to recall here that WHO surveillance systems on attacks on healthcare does not have a mandate to investigate attribution of attacks. इंटरनेट पर Next slide, वायरल होने please. वाली वीडियो में यूनिवर्स बॉस शाहरुख खान की फिल्म के गाने उलट-पिट गा की धुन Next slide, पर अपने please. रक्स के जौहर दिखा रहे हैं और काफी खुश भी हैं अपने बल्लेबाज The health system in Gaza, prior to the 7th of October, had 36 hospitals and 72 primary healthcare units. Currently, only 1/3 of hospitals are partially functional. Of the 24 hospitals north of Wadi Gaza, only 2 are remaining partially functional, so
so one more hospital has lost its functionality. Of the 12 hospitals south of Wadi Gaza, only 3 of those have surgical capacities. Functionality is limited by lack of fuel, supplies, food and clean water. There are also now 2 field hospitals that are partially functional south of the Wadi Gaza line. An estimated 94,000 liters of fuel per day are needed to cover the most critical hospital functions. And hospital grounds are also now hosting thousands of internally displaced persons. Next slide, please. About 60% of beds have been lost in terms of functionality. Patients and health workers are still reported to be present inside several large hospitals in the north of Wadi Gaza line, despite their inaccessibility. 114 dialysis units are now lost from its function, and more than 1,100 patients are treated in hospitals with very low to no power due to lack of fuel or direct impacts of the conflict. Next slide, please. About 2/3 of the Ministry of Health and UNRWA primary healthcare facilities have been closed, further impacting the access to and availability of urgently needed healthcare. Many of the UNRWA functioning health centers are reporting more than double in the increase of consultations, while working with 60% of its original workforce. फीफा के मुताबिक ये अवार्ड 19 दिसंबर 2022 से 20 अगस्त 2023 तक खेल में सबसे नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को दिया जाएगा. Men's football. Into the public health risk analysis from the Gaza Strip, critical public health risks are driven by inadequate access to healthcare and the living conditions created by the conflict. These include risk to pregnant women and their newborn babies in the absence of healthcare, the ongoing and future risk of those who have been severely injured and their opportunities to live a healthy life. Additionally, the mental health needs are immense. While we do not have the exact figures at the moment, we know from past experience that in situations like this, at least 1 in 5 people will need specialized mental health support. We also know that mental health and psychosocial support is a priority in Israel. Next slide, please. The conditions created by the conflict are increasing the risk of infectious diseases, spreading faster because of lack of water and hygiene, overcrowding, and being more difficult to manage in the absence of adequate health care. We are witnessing high levels of transmission of common respiratory and diarrheal pathogens and increased risk of severe epidemics. Signals of acute jaundice, bloody diarrhea, and meningitis were picked up through syndromic surveillance from the Ministry of Health facilities and UNRWA facilities over the last weeks. And we are working to strengthen the capacity to detect, verify, and respond to epidemics. Next slide, please. WHO has put forward a detailed health response plan for the occupied Palestinian territory, focusing on health services in support of the health system, public health intelligence and disease prevention and control, high-value supplies and health logistics, and coordination of partners. Next slide, please. What we have done to date includes multiple high-risk missions to hospitals across the Gaza Strip to assess conditions as well as deliver critical supplies, support the evacuation of patients from north of Wadi Gaza with the Palestine Red Crescent Society, and coordinate the deployments of emergency medical teams. Next slide, please. As mentioned, WHO is working to strengthen the capacity to detect epidemics and to respond to them. This requires timely communication and a minimum diagnostic capacity, which is currently lacking. WHO is working to strengthen the detection and response function and strengthen the laboratory capacity.
जिसके बाद वो फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए थे, जहां उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का WHO and health partners are providing high-value and specialized medical equipment and essential medicines. Almost $20 million of medical supplies have been procured, are in transit or distributed by WHO and partners to Gaza. WHO has established an online tracking system to ensure coordination and prevent duplication. Next slide, please. काफी पसंद किया जा रहा है। As of 7 December, over 3,000 trucks carrying supplies from different agencies have crossed into Gaza through the Rafah border crossing. Of those, 27 trucks carried medical supplies from WHO and other partners. This is not nearly enough. Prior to the 7th of October, 200 trucks a day were not even meeting the needs in Gaza. We needed 500 trucks per day. And even during the pause, only 220 trucks passed for one day. To meet needs, we require more crossing, and we're glad to hear that the Kerem Shalom border crossing may open. Next slide, please. We need for healthcare workers to be protected. The safe passage of medical evacuations and unimpeded access for health cluster partners and emergency medical teams is absolutely paramount to ensure humanitarian health assistance. Next slide, please. The United Nations is appealing for $1.23 billion. For WHO, we have received only 29% of our ask, and health cluster partners even less. WHO released $14.6 million of its internal contingency fund for emergency. We need urgently additional resources to save lives and protect the health system. Next slide, please. In conclusion, the health system in Gaza has been systematically degraded and is collapsing. The public health risks are immense, given the conditions created by the conflict, barriers to accessing health care, challenges in supplying hospitals, and ongoing attacks on health care. The health system in Gaza must be protected, supported, resupplied, and supplemented. People are dying from a lack of access to care and medication, and discontinuation of care. Pregnant women, newborn babies no longer have the services they require, and mental health needs are immense. Access to health care through hospitals and primary health centers must be reestablished and expanded. The risk of epidemics is extremely high. Addressing the conditions that facilitate epidemics must be addressed through multi-sectoral humanitarian assistance. In order to save lives in Gaza, WHO and health partners require conditions to work safely and resources to scale up assistance. Protection of healthcare and aid workers and sustained humanitarian assistance are not possible in the current context. With this, I hand the floor back to you, Mike. Thank you. Thank you very much, Teresa. A pretty stark overview of the situation on the ground right now. There was another photo, another slide. Was there? Sri Lankan board ने सनत जे सूर्या को I just want to end with a little note of hope in what in many ways looks like a very hopeless situation. This is Dr. Ahmed Tahir in Al-Shifa Hospital in a WHO-led mission, the first mission to Al-Shifa, which rescued a large number of premature babies. And this is Ahmed, who's a clinical specialist, caring for the children before their evacuation to the south. Next. And here's Rob Holden, who the DG mentioned. Yesterday, Rob led that mission with Ahmed into the field. And this is Rob. 28 babies were evacuated to Egypt, and huge thanks to the government of Egypt for accepting and treating these very, very, very sick premature children. All 28 of the children who crossed the border into Egypt have survived. They're all thriving. And it was a poignant moment for our staff
to visit and see those children living. I know it's a small drop of hope in a very big ocean of suffering, but at least it shows us that we can do it together, one at a time. N equals 1. It's not 1,000, it's not 1,000,000, it's not 8 billion. One matters on all sides in this conflict. One matters. Next slide. And with special thanks to our team on the ground in Gaza, in the middle there you see Dr. Rick Peppercorn. I hope Rick is online and may be able to speak later. And on the left is Thanos Gargavadis, and on the right Hussam Abdulwan. There are many, many other staff on the ground from many different agencies. Today we pay tribute to all of the humanitarian actors on the ground, the NGOs, local, international NGOs, the partners in the health cluster, our colleagues in the UN system, UNRWA, and UNICEF, and UNFPA. WFP and across the board. Our colleagues in ACHA who provided excellent coordination. Our colleagues in UNDSS who've really done everything to protect the security of our staff. The UN is on the ground. The UN is doing all it can. But in the current context, it is, as the Director General said, almost impossible to continue delivering assistance and most especially scaling up that assistance in the current context of conflict. The space must be created to save life. And we hope that your calls today will create that space. Thank you very much. Thank you, Dr. Mike. Thank you, Secretariat and WHO, for all your efforts. I draw your attention to the draft resolution that will be considered under this item, which is contained in document EBSS/7/conf/1-Rev1. In the spirit of health as a bridge, in the spirit of humanitarianism, I would like to appeal to all of you. We have seen great efforts to come up with a consensus text. We all know that this text is not perfect. No text is. But let us focus on our ultimate goal, which is to protect the health of all civilians concerned by the situation and move forward with a view for it to be an instrument of health and peace. I will now open the floor for discussion. As agreed, I will now give the floor to Palestine and Israel for a 5-minute statement each. Palestine, you have the floor. डेविड वार्नर की अहलिया कैंडाइस वार्नर ने मिचेल जॉनसन को छेड़ने और तरविल करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। अपने शौहर की शानदार सेंचुरी के बाद उन्होंने एक्स पर वार्नर की तस्वीर के साथ खामोश कराने की इमोजी शेयर की। इस मानी खेज ट्वीट के वायरल होते ही शायकीन अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। अक्सर शायकीन का कहना है कि ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सामने आने वाले हालिया तनाज़ों पर मिचेल जॉनसन को जवाब है। On what, to my mind, were the 8 key points that he has articulated फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की हतमी नामजदगियों का ऐलान। रोनाल्डो शामिल नहीं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने मेंस और विमेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड की हतमी नामजदगी का ऐलान कर दिया। फीफा ने जुमेरात को साल 2023 के बेहतरीन खिलाड़ियों के अवार्ड्स के लिए हतमी नामजदगियों का ऐलान कर दिया। फीफा के मुताबिक ये अवार्ड 19 दिसंबर 2022 से 20 अगस्त 2023 तक खेल में सबसे नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को दिया जाएगा। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड की नामजदगियों में अर्जेंटाइन के लियोनेल मेसी, नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले एर्लिंग हालैंड और फ्रांस के एम्बापे शामिल हैं। विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड की नामजदगियों में एटना बोनमाटी, लिनेटा काइसीडो और जेनिफर हर्मोसो शामिल हैं। फीफा फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर अवार्ड की तकरीब 15 जनवरी को लंदन में होगी। श्रीलंकन बोर्ड ने सनत जयसूर्या को कौमी टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने
साबिक कप्तान और ओपनर सनत जयसूर्या को कौमी टीम का कालवक्ती कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। जुमेरात को श्रीलंका क्रिकेट SLC ने ऐलान किया कि उन्होंने साबिक कप्तान सनत जयसूर्या को फौरी तौर पर 1 साल के लिए कालवक्ती क्रिकेट कंसल्टेंट मुकर्रर किया। जयसूर्या को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि SLC के कौमी प्रोग्राम बेहतरीन पेशावराना महारत के साथ मुनक्किद। साबिक ओपनर तमाम खिलाड़ियों और कोचिंग अमले की बेहतरीन कारकर्दगी की निगरानी के भी जिम्मेदार होंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि वो परफॉर्मेंस सेंटर के साथ मुंसलिक तमाम टीमों की तरबियत और कोचिंग की जरूरियात का भी ख्याल रखेंगे। वाज़ेह रहे कि ICC वर्ल्ड कप में श्रीलंकन क्रिकेट टीम की शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इंतजामी सतह पर कई तब्दीलियां सामने आई। लगता है आजम मेरी ट्रेनिंग से हिचकिचा रहा है। मुइन खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मुइन खान ने अपने बेटे और कौमी क्रिकेटर आजम खान के हवाले से कहा है कि लगता है आजम मेरी ट्रेनिंग से हिचकिचा रहा है। PSL फ्रेंचाइज क्वेटा ग्लैडिएटर के टीम डायरेक्टर मुइन खान ने कहा कि यह आजम की मर्जी पर मुनहसर है कि वो जिस टीम से चाहे खेले। मुझे लगता है कि वो मेरी ट्रेनिंग से हिचकिचा रहा है। लाहौर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तकरीब में ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू में मुइन खान ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आइंदा सीजन में आजम दोबारा से क्वेटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन कर लें। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री में नौजवान खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। अहमद शहजाद, उमर अकमला, शर्जील खान को लेने का हमारा कोई इरादा नहीं। मुइन खान का कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग की समत दुरुस्त है। 10 बरस के बाद जब नई टीमें आएंगी कि तो मजीद अच्छी होगी। इस वक्त हमारी नजर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जितवाने पर है। वाज़ेह रहे कि आजम खान पहले क्वेटा ग्लैडिएटर का हिस्सा थे, जिसके बाद वो फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए थे, जहां उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। बेंकी के गाने ओलंपिक पर इस गैल की खातून के साथ डांस करने की वीडियो वायरल। यूनिवर्स बास क्रिस गैल की जानिब से शाहरुख खान की फिल्म बेंकी के गाने ओलंपिक गया पर डांस करने की वीडियो वायरल हो गई। बॉलीवुड के बाद शाह खान की फिल्म बेंकी का नया गाना रिलीज हुआ है। इस शायकीन की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है। गाने उलट-पिट गया को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है, जिसे अब तक 61 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस गाने की मकबूलियत ने वेस्ट इंडीज के जारे मिजाज बीटर क्रिस गैल को भी अपने सिहर में जकड़ लिया और वो इस गाने पर एक खातून के साथ थिरकते दिखाई दे रही है। इंटरनेट पर वायरल होने वाली वीडियो में यूनिवर्स बॉस शाहरुख खान की फिल्म के गाने उलट-पिट गा की धन पर अपने रक्स के जौहर दिखा रहे हैं और काफी खुश भी हैं। अपने बल्लेबाजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर क्रिकेटर के डांस की ये वीडियो तेजी से वायरल हो गई। फिल्म और क्रिकेट शायकीन दोनों ही उनके इस डांस को काफी पसंद कर रहे हैं। कैंडाइस वार्नर ने शौहर की शानदार सेंचुरी के बाद जॉनसन के लिए पोस्ट शेयर कर दी। डेविड वार्नर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाने के बाद उनकी अहलिया ने मिचेल जॉनसन को तरवील करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज की शुरुआत से कबल साबिक क्रिकेटर मिचेल जॉनसन ने ओपनर डेविड वार्नर को तनकीद का निशाना बनाया था। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलियावी तारीख के बदतरीन स्कैंडल में मुलव्वस प्लेयर्स को टेस्ट मैच फेयरवेल नहीं देना चाहिए। पर्थ में ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कैंगरू ओपनर डेविड वार्नर ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 164 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम हो गई और उसने पहले दिन 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए। डेविड वार्नर की अहलिया कैंडाइस वार्नर ने मिचेल जॉनसन को छेड़ने और तरवील करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। अपने शौहर की शानदार सेंचुरी के बाद उन्होंने एक्स पर वार्नर की तस्वीर के साथ खामोश कराने की इमोजी शेयर की। इस मानी खेज ट्वीट के वायरल होते ही शायकीन अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। अक्सर शायकीन का कहना है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सामने आने वाले हालिया तनाज़ों पर मिचेल जॉनसन को जवाब है। After the pandemic, there is a global expectation that more equitable solutions will be found for health challenges. And as the driver of the widely appreciated फीफा प्लेयर